Hello viewers, today I have brought for you another video on parts of speech. So welcome to my YouTube channel. So let's start the video. So as you can see over the screen, there are 8 parts of speeches. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, and interjection. But according to grammarian, many grammarian and many people consider that there are 8 parts of speech. And many people and grammarian, they consider that now there are 9 parts of speech. यानी बहुत सारे ऐसे grammarian या बुक्स राइटर्स हैं या कुछ ऐसे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो कहते हैं कि 9 पार्ट्स स्पीच होते हैं, कुछ कहते हैं 8 होते हैं। सो बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, देयर आर 8 पार्ट्स स्पीच, बट हमने यहाँ पर शामिल किया है आर्टिकल को। सो इवन वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल दैट इज कंसिडर्ड द 9th पार्ट्स स्पीच in English grammar. So at your screen you can see there are 8 parts of speech, but article is also mentioned. So let's move towards the video. Noun. So we're going to start from noun, that what is a noun and how to use it. So look at the screen. A noun is a naming word. It is a name of a person, thing, place or an animal. यानी noun simply अगर आपसे कोई पूछता है कि what is a noun, you have to say it is a naming word. किसी भी चीज के नाम को या किसी भी नाम को हम noun कहते हैं. Person, Ayaz, John, Maria. Thing, book, tab, laptop. Place, Karachi, school, home. Animal, dog, cat, elephant. So look at the screen. So yeah, I think it's clear now that a noun is a name of a person, name of a thing, name of a place, and name of an animal. So, and the next, pronoun. It is a word that is used instead of a noun. यानी अगर इसकी हम उर्दू करें तो वो वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो. Okay, so how it will be used instead of a noun? So let's find out. Ali is coming today. Ali is coming today. So Ali is a noun, right? So the very same sentence I have written, same sentence मैंने देखें कि साइड में लिखा है, and that is he is coming today. यानी अली आज आ रहा है और दूसरी तरफ वो आज आ रहा है. Yani Ali has been converted into what? Pronoun, which means noun की जगह पर जो Ali है हम use कर रहे हैं he, and what is he? He is called a pronoun. And you can look at these words: I, we, you, they, he, she, it, all, everybody, nobody, and everyone. These words are said to be called pronoun. So simply pronoun क्या है? वो word जो noun की जगह पर इस्तेमाल हो. I hope you have understood. If you have any problem in understanding any kind of parts of speech, you can comment me. I'll respond to you. Then we have verb. It is an action word. Simply, what is a verb? It is an action word. यानी वो word जिससे action जाहिर हो. Let's suppose go, run, eat, buy, sell. These words, they show something like action. ये जो वर्ड्स हैं एक्शन को जाहिर करते हैं. अगर हम सेंटेंसेस में वर्ब को यूज करें तो हमें मजीद पता चलेगा कि ये कैसे एक्शन को जाहिर करते हैं. दैट हाउ दे वर्क ऑन एक्शन. लुक, मॉडल सेंटेंसेस. शी इज ईटिंग फूड. वो खाना खा रही है मीन्स व्हाट इज हर एक्शन? हर एक्शन इज ईटिंग. वो कौन सा काम कर रही है? ईटिंग का, खाने का. They speak English. वो इंग्लिश बोलते हैं. Means if I ask you what is their action,
उनका कौन सा काम है या कौन सा काम कर रहे हैं, तो सिंपली वी विल से दे आर स्पीकिंग, मीन्स दे स्पीक इंग्लिश. सो सिंपली व्यूअर्स, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. वो वर्ड्स जिनसे कोई भी एक्शन जाहिर हो, जिनसे कोई भी काम जाहिर हो, उनको हम इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं, उनको हम पास्ट स्पीच में कहते हैं अ वर्ब. Then we have adjective, a word that modifies a noun or a pronoun. वो वर्ड जो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे. अब यहाँ पर जो वर्ड मॉडिफाई यूज हुआ है उसकी मीनिंग क्या है? मॉडिफाई मीन्स जो नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल हो और उसकी मीनिंग्स में इजाफा करे. मीनिंग्स में कैसे इजाफा करे? कि उसकी क्वालिटी को जाहिर करे, क्वांटिटी को जाहिर करे, मीन्स उसकी मीनिंग्स में इजाफा करे, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. Ask these questions. What kind of, how many, how much. अगर आपने एडजेक्टिव की पहचान सेंटेंस में रखनी है, कि अगर आपको कोई सेंटेंस देता है या आप कहीं सेंटेंस देखते हैं, तो हाउ विल यू गेट टू नो, आपको कैसे पता चलेगा कि आया कि ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या प्रोनाउन है. उसके लिए आपने क्या करना है, इन तीन चीजों को जहन में रखना है. What kind of, how many and how much. How कैसे इनको यूज करेंगे, देखें. He is a boy. अब एडजेक्टिव आपसे पूछ रहा है, ठीक है ये एक लड़का है, ओके आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं. बट व्हाट काइंड ऑफ, किस किस्म का लड़का है? ही इज अ लेजी बॉय. ये एक लेजी बॉय है, मीन्स ये एक सुस्त लड़का है. ओके अगर मैं कहूं, लेट्स सपोज she is a girl, then adjective आपसे पूछेगा what kind of girl. आप क्या कहेंगे? She is a smart girl, she is an active girl, she uh, is a heavier girl. Okay, means you can modify any word, you can modify in a sentence. Another example, she is a nurse. Again, adjective is asking what kind of nurse she is. She is a professional nurse. वो एक professional nurse है. Now you can see adjective is asking questions. What kind of nurse she is? She is a professional nurse. I have students. अब adjective पूछ रहा है, okay, all right, you have students, but how many students do you have? So you answer, I have 30 students. Okay, how many जाहिर करता है, शो करता है नंबर्स को. 1 से लेकर 100 तक चले जाएं, thousands तक चले जाएं, 1 2 3 first second third. So it shows the numbers, how many. I have rice. But adjective is asking how much rice do you have? I have much rice. Okay, so here, if you will look at these examples and sentences, I hope that you will understand handily and easily that how an adjective is modifying a noun, a pronoun. So I hope you're getting whatever I'm trying to tell you, whatever I'm trying to help you out. So let's move towards the next parts of speech. Article. As I told you at the very beginning that I was not ready to include article in my list of the parts of speech because मेरा कहना है, मेरा मानना है कि there are only 8 parts of speeches. Okay, but according to many writers, grammarians, education institutes, they consider it a parts of speech. That's why we have to learn it. So look at the screen. Article refers to a noun, means it talks about a noun. A and the are called articles, these three words. So over here, THE, either you can pronounce it the or the, and indefinite article a and an. So these two are the kinds of the articles. इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि द और दी
ए और एन को हम कहाँ और कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो बनाई गई है ये जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, उनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स पर बनाई गई हैं, ताकि जो बिगिनर्स हैं, लोअर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, लोअर टू एडवांस क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स, वो इनको समझें, इनसे हेल्प लें, ताकि उनको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्लियर हो सके। Well, so articles refers to a noun, a, an, and they are called, and the are called articles. Definite article, the, and indefinite article, a and an. So the next, adverb. So according to me, adverb and adjective, they both are little bit abstruse in understanding. इनको समझना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है in fast speech, but अगर आप इनके फार्मूले पर काम करें according to rules and formulas, then you can easily understand that what is an adverb and what is an adjective. A word that modifies the verb. सबसे पहले ये verb की meanings में इजाफा करते हैं. Then a word that modifies an adjective, ये adjective की meanings को भी modify करता है, उसमें इजाफा करता है. And another adverb, और खुद की meanings में भी इजाफा करता है. Simply adverb वो word है जो किसी verb में, adjective में या किसी दूसरे adverb की meanings में इजाफा करे. So adverb asking is asking three questions: how, where, when. जैसा कि हम एडजेक्टिव में पढ़ चुके हैं, what kind of, how many, how much. Here in adverb is asking three questions: how, where, and when. Read. So now adverb is asking, ठीक है, okay, all right, read. I'm ready to read, but how should I read? मुझे कैसे पढ़ना चाहिए? Read hurriedly, जल्दी पढ़ो. ओके, रीड यानी पढ़ो. एडवर्ब पूछ रहा है, ठीक है, मैं कैसे पढ़ूं? सो आप एडवर्ब आंसर दे रहा है कि जल्दी में पढ़ें. रीड हरीडली. मीट मी, मुझसे मिलें. एडवर्ब पूछ रहा है, ओके, आई एम रेडी टू मीट यू, बट व्हेन? सो you have to answer. Answer is meet me daily. Wake up early or late. Okay, how he wakes up early or late. So these three questions, if you talk about where, let's suppose meet me, if adverb ask that where to meet, then it answers that meet me here, मुझसे यहाँ पर मिले, meet me there. So here and there, the both words are also considered adverbs. So this is the adverb, and you can look at the screen. I hope you have understood the basic concept of the adverb. Furthermore, in the next video, I'm going to talk about adverb and its types as well, and that will help you out in understanding in a more better way about the adverb. And then we'll have conjunction. A word that joins words, sentences, and phrases together. वो word जो sentences को, words को, phrases को आपस में जोड़ता है. How? It means that conjunction का मतलब है connector, जो किसी चीज को जोड़े. Let's suppose हमारे घर में अगर टेबल टूट जाए, तो हम उसको किसी चीज से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. या कोई ऐसी चीज टूट जाए तो we try to connect that thing. Or we can say in simple words, connect का यहाँ पर मैं word use कर रहा हूँ, but we can say that we try to repair, connect the parts. Okay, so here is the same case. You can see example: and, but, because, or. These are the simple example defining conjunction. So furthermore, he is Ali and he is my friend. She is ill, but she is on time. So you can look at both sentences, and but. These both words are doing what? They are connecting sentences. Okay, लेकिन conjunction में बहुत सारे words आते हैं, और भी बहुत सारे words हैं, types हैं. Inshallah in next video
I'll be teaching you and telling you about those types. So next, preposition, the most important part of parts of speech. A word that shows the position, direction, and place. Means simply you can look at the definition of preposition. So it is telling us that preposition shows the position, direction, and place and relationship. Three things are mentioned here: position, direction, place. On, in, into, at, among, between, upon, behind, under. These all are called prepositions in English grammar. So furthermore, you can see it is on the table. Now, what is the position of it? It की क्या position है? वो table पर है. Okay, shows the position. Ali is in the class. Okay, what is the position or place? What is the place of Ali? Ali is in the class. They are with us. Okay, this is also preposition. If I say I'm going to school, so what is my direction? It shows also direction that I'm going to school. So simply you can look at the definition of the preposition and the examples are given. So this is what we call a preposition. And then interjection, a word that shows some sudden feeling of a mind. कभी कभी अचानक से हमारे जहन में कुछ इस तरह के अल्फाज आते हैं जब हम शौक हो जाते हैं या खुशी के इजहार के लिए या गम के इजहार के लिए, जो हम जैसे हम कभी कभी हम शौक में आ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं. लेट्स सपोज Oh, we have won the match. Oh, we have won the match. Means हम हैरानगी का जाहिर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ we are expressing joy. हम खुशी को भी जाहिर कर रहे हैं. अच्छा, in interjection we will use mark of exclamation. ये mark का हम use करेंगे. That is quite necessary. And now look at sentence. Oh, he's here. So here we are talking about surprise. Hooray, we have won the match. So here, hooray is expressing the happy moment. OMG, he did it. So I'm surprised that he did it. So simply interjection means some sudden feeling of a mind. ये किसी हैरानगी, खुशी के इजहार के लिए, गमी के इजहार के लिए जब अचानक से ये अल्फाज हमारे जहन से निकलते हैं, तो उनको हम कहते हैं interjection. So finally, it was our last parts of speech. That was interjection. I hope that you people have understood the basic concept of parts of speech in English grammar. But if you have any problem in understanding any kind of part of speech, you can text me, you can comment me, and I'll help you out. And don't forget to subscribe my channel. Thank you and see you in the next video.